Assalamu alaikum, dear friends. Welcome once again to English with Isra. Today is our first lecture for that student who cannot speak English and also spell English. So, the first lecture is about what is the difference between letter and alphabet. Oh, some of the students asking. अब क्लास में एक स्टूडेंट है जो बहुत जीनियस है और उसने सर से क्वेश्चन किया, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट. सो आई एम द टीचर, सो आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर. लेट मी टेल यू. अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर. लेट फॉर द फर्स्ट टाइम we know that we do not know anything about alphabet and letter. So, what is alphabet? Alphabet is a set of letter. Set of letter. Alphabet is a set of letter. What is mean by set of letter? Do you know set of cup? It is enclosed in a box. So, as like that box, a letter is enclosed in a box of alphabet. Even there is a single alphabet in every language with some exceptions like Serbian language. So आपको ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होता है. अल्फ़ाबेट हमारे साथ सेट ऑफ लेटर. सेट किसे कहते हैं? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, समथिंग. सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ समथिंग. अगर आप किसी चीज़ को एक डब्बे में बंद करें उसे हम सेट कहते हैं. जिस तरह हम प्याली के डब्बे में 6 प्याली रखते हैं तो ये सेट ऑफ लेटर होता है, सेट ऑफ कप होता है. इसी तरह अल्फ़ाबेट के अंदर हम लैंग्वेज के हिसाब, यानी इंग्लिश में जो है 26 लेटर है, 26 लेटर enclosed in one alphabet. Okay, so there is a single alphabet in English. इंग्लिश में क्या है? सिंगल अल्फ़ाबेट है और इस सिंगल अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर है. सो वी विल लर्न वन बाय वन व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज अल्फ़ाबेट. लेट नो व्हाट इज आफ्टर दैट. सेट ऑफ कप आर एनक्लोज इन अ बॉक्स. सो सेट ऑफ कप, लुक इट हियर. ये देखो हमारे साथ जो कप है वो एनक्लोज है ना, तो एनक्लोज इन अ बॉक्स and it is called set of cup, and we called this set. As like this, there is a set of alphabet which is set of letters which is called alphabet. So set of, look it here, set of letters are enclosed in an alphabet. So this is called alphabet. A से लेकर Z तक ये सारे हमारे साथ एक ही अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट है. अच्छा, अब इसकी अलग अलग क्या है? ये लेटर है. लेटर, A is a letter, B is a letter, C is a letter. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि what is letter? Okay, let me tell you what is letter. Letter is the shape of the sound. हम जब A कहते A के कहने से आवाज निकलता है. इस आवाज का एक शेप होता है, एक शक्ल होता है. तो उस शेप को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. उस आवाज की शेप को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. हमारे साथ इंग्लिश में 26 लेटर है और इन 26 लेटर की कितनी आवाज़ें हैं? इनके कितने आवाज़ें हैं? इनके 24 साउंड्स हैं. इट्स मीन दैट 26 लेटर मेक कितने आवाज़ें? 44 साउंड्स बनाते हैं. यानी अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बाद. ये फर्स्ट लेक्चर है. जिस तरह हमारे साथ A जो है, A is a shape of sound. A is A. I say A. So A will give us a sound of A, also a sound of Ain.
also a sound of alif, a. So it's give us a sound of ain. Ahmad, Amir, alif a, mim ram. Okay, Amir. So Amir, A-M-I-R, Amir. So look at the difference between this. B, ba. So the sound ba, it is a shape of a sound ba. So B will give us a sound of ba, like in Arabic and something else. Look at here. I have given the example. There is two person. They are making sounds. A, B. Okay. So letter जो है हमारे साथ क्या होता है? Letter is a shape of a sound. उस शक्ल उस आवाज का शक्ल होता है जो हम निकालते हैं. ए के बोलने से जो आवाज निकलती है उस आवाज की शक्ल को लेटर कहते हैं. लेटर हमने किस लिए बनाया है? ताकि हम आवाज़ों को शक्लों में तब्दील कर सकें, ताकि हम क्या करें, हमें पता चले कि इन आवाज़ों का क्या मतलब है. लैंग्वेज किस तरह बने हैं? आवाज़ों से बने हैं, साउंड से बने. कम्युनिकेशन कन्वर्ट इनटू लेटर and letter converts into words and word converted sentence and sentence are converted to a paragraph and paragraph make a book. And after that we have invent the word by reading the book, and we can also understood what happened in the past because of the book of the past. Okay, there are two type of letter, vowel letters and consonant letter. यहाँ देखें, हमारे साथ टू टाइप ऑफ लेटर होते हैं. वावल लेटर आर 5, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. This is called vowel letter. अगर आप इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि डिटेल में जाओ, तो डिटेल में ये है कि वावल्स जो है इसमें ब्लॉकेज ऑफ एयर नहीं होता. A, E, I, O, U. So okay, there is no lapsing in these sounds. Lapsing नहीं होता इसमें. जो lips होते हैं उसका जो मिलाप है वो नहीं होता. अच्छा, तो इसमें यहाँ देखिए, A lip नहीं मिलते ना, E नहीं मिलते, I नहीं मिलते, O नहीं मिलते, U नहीं मिलते. इस तरह और भी डिफरेंस है. कॉन्सोनेंट साउंड आर दैट आर एक्सेप्ट देन vowels, and they are 21. And some of the students asking that W and Y are semi vowels. So that is true, but I haven't mentioned here because it's not a high level English. Okay, so you should remember this for the first class for us. Thank you for watching and hope you understand my lecture. And if you understand, please comment, like and share it with those people who can't understand this topic, and I will be very thankful for you. Thank you so much for watching. Please subscribe and